देखिए, हर शादी में वैसे तो छोटे छोटे इश्यूज होते ही रहते हैं जो बाद में संभल जाते हैं और 7 फेरों के बाद शादियां भी निपट जाती हैं। लेकिन एक शादी ऐसी है जिसमें फेरे हैं 14 और स्यापे यानी कि इश्यूज हैं बहुत सारे। मैं बात कर रही हूँ इस साल की फैमिली एंटरटेनर्स में सबसे बेहतरीन फिल्म जो आई है हाल फिलहाल में, 14 फेरे, जिसमें कमाल की स्टार कास्ट है, जिनमें से एक इस वक्त हमारे साथ है द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एंड माय पर्सनल फेवरेट गौहर खान। गौहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। How sweet. Thank you so much for a lovely intro. थैंक यू, थैंक यू। सो गौहर, किस तरह का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, पीपल आर लविंग इट, और अलग अलग तरह के कमेंट्स हैं कि फैमिली एंटरटेनर है, फाइनली समथिंग पूरे परिवार के साथ जिसे देख सकते हैं। सो हाउ इज दिस होल लव मेकिंग यू फील? Oh, it's making me feel amazing. In fact, OTT पे already release हो चुकी है. अब उसका world television premiere हो रहा है 24 तारीख को and pictures पे. तो response तो बहुत ही बढ़िया रहा है from everybody who's watched it on OTT already. People have loved the concept. एक बहुत ही serious topic को बहुत ही easy way में tackle किया गया है, और एक light comedy है, एक social drama है. गाने बहुत बढ़िया हैं, तो you won't feel like changing the song while the film is going on, because the songs keep you involved in the story, and the performances are fabulous. I mean, Vikrant and Kriti and Jameel sir, myself, everybody who's in the film. There's so many different characters who've done such a fabulous job. People who played the real parents. बहुत 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 मजेदार फिल्म है. इसकी लिखाई बहुत अच्छी है, डायलॉग्स अमेजिंग है. So I have actually been very fortunate कि मुझे जुबीना का रोल करने मिला. करेक्ट। एंड जैसे आपने कहा, ये फिल्म एक बहुत सीरियस इशू को उठाती है, लेकिन ऐसा बहुत प्रीची वे में नहीं। एंड इनफैक्ट जब मैं फिल्म देख रही थी तो मुझे पुरानी जो क्लासिक फिल्म्स होती थी, ऋषिकेश मुखर्जी, उस तरह की, तो ये वैसा एक टच लगा कि आप हंसा रहे हैं बट इन अ वेरी साइलेंट एंड सबड्यूड मैनर, के आदमी को खुद हंसी आ रही है, इट्स नॉट फोर्स्ड लाफ्टर। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑल्सो ये फिल्म बहुत पहली बार आप ट्रिपल रोल प्ले कर रही हैं, एंड ऑल्सो पहली बार जब आप एक माँ, चाहे एक नकली माँ का ही रोल था बट वो आपने प्ले किया। सो व्हाट मेड यू से यस टू दिस रोल इंस्टेंटली? वो एक चीज क्या थी? Well, I had to audition for the role because ये role इतना important था देवांशु sir के लिए. He couldn't have taken just about anybody because he wanted to see कि will a young girl be able to pull off someone who's double her age. Not once but twice, because I played two mothers in this film. So he auditioned me. He did like a nice 4-5 hour session with me, and I think he saw that hunger in me, that I wanted to go that extra mile to get this role, because this role was so important for me. When I read about it, when I heard about it, I said, I really want to do this. And I was not skeptical about, whether should I play older or not play older, because I knew I was playing a role in a role. So मेरे लिए वो कोई issues नहीं थे. And I truly wanted to be a part of this film, because Devanshu sir was so clear about his vision, about, in fact, he will be very flattered if you tell him that you got the Rishikesh Mukherjee, feels in this film, because he is that kind of a director. He wants to keep it real. Even in comedy, he doesn't want to go over the top. He doesn't want to make people feel like, "Arey, kuch fake ho raha hai, isliye aapko hansi aa rahi hai." He wants to keep it. He wants to keep it real. He wants to keep it relevant. He wants to keep it, non-dramatic. He doesn't like drama. Even if he wants someone ke koi bhag raha hai, he doesn't want everybody to go, no. He wants it very subtle, very real. And he was looking out for actors like that. Correct. So when he met me, he's like, "Bhai, tum meri Zubina ho, tum kar paogi, mujhe pata hai, aa jao." So it's truly an honor. It's truly an honor to be given that opportunity. And now that I'm getting the appreciation, I'm feeling like I'm on, seventh heaven. And that's well deserved, क्योंकि वैसे भी आप दिल्ली की मेरिल स्ट्रीप हैं, और आपने काम जो किया है बहुत यकीनन बहुत ही उम्दा किया। बट हाउएवर गौहर, एक सवाल था कि आप यहाँ पर कृति की और विक्रांत के जो कैरेक्टर्स हैं, उन दोनों की नकली माँ आप बनी हैं। आप, एक बिहारी है, दूसरा जाट है,
तो ये जो एक्सेंट था, ये इसे पकड़ना कितना मुश्किल रहा, बिकॉज यू हैव डन बोथ विद सच ईज के भाई आप तो यही भाषा बोलती हैं. Thank you. Again, I'll give the credit to Devanshu sir because he wanted to make sure कि वो ऐसा नहीं लगे कि यार convincingly नहीं बोल रही है. So he got me. I told him I said, so he got me two dialect coaches, one for the Rajasthani jat, one for the Bihari accent. And literally, I had only one session with them, and they were confident कि ये लड़की pull off कर लेगी because in the reading only he was like, they were both different coaches, but they both realized कि ये अच्छी बढ़िया student है, उसको एक session में हम सिखा देंगे, खत्म हो जाएगा. And thankfully, Devanshu sir is very good with the Bihari accent also because he's from Bihar. So he helped me a lot on set, and अगर मेरा कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता था, then he would come and guide me through it. So once I learned it, I knew that I'm going to get it right. करेक्ट. एंड ऑल्सो कई बार ऐसा होता है ना, जब आप एक ऐसा इस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे होते तो वो कैरिकेचर ज्यादा लगने लगता है. बट हियर एवरीबडी, पीपल हु आर नॉट फ्रॉम दो स्टेट्स, they've spoken it so naturally. So did everybody go through a workshop, and how did this whole thing come about, because everybody is sounding so natural? I think everybody did go through a workshop, and also he made sure that he picked up actors who can obviously do a good job of it. Not making it sound caricaturish, obviously. There is one reviewer who, I don't know what problem the person has with me, but in every review she'll always pick on me for something or the other, and all other reviewers will be giving me like flying colors. Okay, so in that one review she says, oh, she's caricaturish. I'm like, how come 99% of the reviewers, nobody felt that I made it caricaturist? But I truly believe that because I have an ear for accents, for language. I grasp very fast. In fact, I did a Punjabi film where I actually dubbed for the film, and now I can speak Punjabi fluently. I learned the language for the film. So that's how much I get into a character, and I really wanted to make sure that वो fake ना लगे. And Devanshu sir के कोई भी fake ना लगे, क्योंकि he picked out actors that he thought would do it convincingly. डेफिनेटली. एंड जो जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, इट्स अ ब्यूटीफुल ensemble कास्ट जो इकट्ठा की है, और फिल्म जो है वो सिर्फ लीड हीरो हीरोइन से नहीं चलती है. जो सपोर्टिंग कास्ट है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है. एंड दिस फिल्म हैज, मतलब आप नाम लीजिए, कुछ लोगों को आप भले ही नाम से नहीं जानते हैं, बट शक्ल ऐसी, अरे ये है तो फिल्म अच्छी होगी, एंड यू फॉल इन दैट कैटेगरी जिसका नाम भी लोग जानते हैं एंड शक्ल से भी अच्छा ये है. तो हाउ वाज दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सच ब्रिलियंट एक्टर्स? Oh, I tell you, it was like a school, because in a scene where the families were involved, almost everybody was in the scene, and just to watch them and everyone's time, and Yamini ji, and there's Vikrant, and there's Kriti, and there's Sumit, and there's so many. The Chotu, the guy who plays Chotu, he's just so brilliant. Like, as an actor, there are so much to learn from all these fabulous actors, and there were scenes where I was so involved in it that Devanshu sir wouldn't call cut. So we all would just keep improvising and keep taking our lines or whatever in different ways. And I remember Devanshu sir's direction, because he says कि अगर मुझे लार्जर पिक्चर मिल रहा है ना, मैं उसको एडिट करके उसमें से क्या चुनूं वो मेरा प्रॉब्लम है. लेकिन आप लोग रुकिएगा मत, आप लोग अपने किरदार में, आपके दिमाग में. So he gave us that freedom, and then he picked and he chose what he wanted to keep in the scene. Okay. So that was in itself a very big learning experience for all of us. Okay, but एक क्वेश्चन हमेशा मुझे ये पूछना होता है to all the stars that I'm interviewing, as a true cinema lover, गौहर, कि हम पूरी पिक्चर जो एडिट होके आती है वो देखते हैं. बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स होते हैं जो हमको ऑब्वियसली नहीं पता होते हैं. नाउ सिंस दिस इज अ कॉमेडी फिल्म जिसमें आप बिना हंसाए, बिना डेलिबरेटली हंसाए, ऑब्वियसली हमें गुदगुदा गए हैं आप, बट ऐसा कुछ हुआ कि कोई सीन कभी चल रहा हो एंड सडनली समथिंग फनी हैपेंड एंड सबकी हंसी छूट गई, कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा हो? अगर एक गाना है उसमें फिल्म में,
जिसमें एक सेक्शन आता है, एक बार आओ जी जमाए जी वावड़ा, वो मेरे पर है गाने पे। वो सेक्शन पे सास आती है और सास नाचने लग जाती है, तो अब सबको कंट्रोल भी करना है कि अरे ये क्यों फैल रही है जुबीना, नो शी इज नॉट सपोज्ड टू बी डांसिंग एज अ बिहारी मॉम, बट देयर शी इज गोइंग एंड शी इज गोइंग यू नो क्रेजी डांसिंग। तो उसमें एक सेक्शन था जिसमें म्यूजिक था वो पीस, एंड आई वाज सपोज्ड टू डू माय बिट एंड जस्ट मूव आउट, and then Rajiv sir, the choreographer, and Devanshu sir on the mic said, Zubina, go. And I just went mad. मतलब मैं as a सास की गेटअप में वो सारा प्रोस्थेटिक मुझे लगा हुआ है, बम पैड्स, you know, breast pads and everything looking like I'm big. Obviously, there's so वजन on me. और मैं पागलों जैसे नाच रही थी उसमें, and they didn't call cut. They just kept going. They just kept seeing my madness. एंड जैसे ही वो कट बोला, एवरीवन वेंट मैड, सब हंसने लग गए, सब आके मुझे हाई फाइव दे रहे हैं। विक्रांत पागल हो गया, विक्रांत कहता है पागल है, व्हाट हैव यू डन, व्हाट आर यू डूइंग। तो ऐसे कई सारे यू नो मोमेंट्स थे इस फिल्म में जहां पर nobody called cut, we just kept going. ओके, एंड टॉकिंग ऑफ विक्रांत, उन्होंने कहीं किसी इंटरव्यू में कहा था कि जब आपके साथ उनका पहला शॉट हुआ था तो आप पूरे अपने प्रोस्थेटिक्स में थी और उनको देख के लगा कि अरे तो अम्मा जी हैं, ये जुबीना है। और बाद में कहीं कोई पार्टी थी जहां पर आप यू नो कोटिंग हिम, गौहर केम एज द गॉर्जियस गौहर दैट शी इज एंड माय हार्ट स्किप्ड द बीट। तो ये बताया उन्होंने, आपको शेयर किया आपके साथ? He is just too kind, yeah. He's just too cute. हाँ, उन्होंने मुझे वहां पर एक्चुअली सेट पे भी बोला था कि कृति को वो बोल रहे थे कि यार मेरे साथ तो सडनली स्लो ट्रॉली शॉट हो गया, स्लोमो शॉट हो गया। तो I saw her in slow-mo and मैंने कहा विक्रांत you're such a sweetheart। लेकिन ये उन्होंने एक्चुअली एक इंटरव्यू में बोल दिया और वो हेडलाइन बन गई हर इंटरव्यू की। I was like, oh God, विक्रांत। But it's true because you know, even I had forgotten what I look like normally because it was a 1 month long schedule jahan par you know we were shooting back to back because we couldn't have a cut. In fact shaadi ke agle din hi I was looking like the amma ji in that outfit, and then my husband joined me on the 31st of New Year's right after being married just 3 days ago as a nayi naveli dulhan in that attire, and we've celebrated New Year's Eve like that. Imagine, that's how an understanding husband I have. Touch wood to that. Vikrant is a doll. He's a darling. He's just a person who has, you know, no insecurities. He will compliment you left, right, and center. So he's just that person. He's a generous person. Yeah. Okay. And while we are now on the topic of your marriage, first of all, congratulations. Better late than never. So yes, I'm meeting you today. So congratulations, and may you have a happy married life. But also, जैसे कि आपकी फिल्म में भी है और हम सब जानते हैं कि शादी में कोई ना कोई इश्यूज होते रहते हैं, और उस फिल्म में भी जितने ड्रामा एक इंडियन वेडिंग में होते हैं वो सारे इमोशन, सारे ड्रामा है। आपकी शादी में इनमें से कोई ड्रामा हुआ? No. Zaid and I had decided कि जिसको जो ड्रामा कंप्लेंट्स जो रखनी है ना आप घर पे रखिए, क्योंकि हमारी शादी nobody, everybody's happiness matters but nobody's tantrums will be taken. So Zaid and पता है फैमिलीज में कुछ ना कुछ होता ही है, कि कौन क्या। हमने बहुत क्लियर रखा था, हमारे लिए हमारी फैमिलीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस वक्त the moment is for Zaid and I, and everybody should you know come in happiness and contribute to that happiness rather than having a list of things of expectations which we were not going to entertain. So thankfully हमारी खुशियां ही थी. There were no tantrums at all, and we didn't even put up with anything. Okay. And God willing, आपकी शादी में नहीं पूरी जिंदगी में तमाम आपकी बस खुशियां ही रहे और tantrums और ड्रामा बिल्कुल ना रहे. I sincerely hope for that. Talking about work, गौहर, जितने mediums entertainment के हैं आपने लगभग सब में काम किया हुआ है. But एक actress के तौर पे, एक artist के तौर पे कोई रोल, कोई genre अभी भी है दिली ख्वाहिश जिसको करने की है? I want to do action. In fact, you know, it's such an irony that I'm one of the most fittest actors around, but I've never been offered action. So I want to definitely do action for sure. Okay. Last year, I kaha tha, I really want to do comedy, और comedy आ गई मेरे पास. So I'm hoping that I'm saying that I want to do action, तो अब मेरे पास action भी आ जाएगा.
Okay, so आमीन on that, and maybe आप ये manifest कर रही हैं, and next interview जो हम करें इंशाल्लाह वो maybe आपकी किसी action film या series का हो. Inshallah, I mean, thank you, thank you. Okay, so what next in the pipeline? There's lots, alhamdulillah. There's a big show that's releasing early next year. There is a film that I've completed. There's a show that I'm starting to shoot now, a new show. In the next 2-3 days, I'm starting that. I've got a couple of videos that are already shot up for release. Yeah, I have another show that's up for release, which I had shot a couple of years ago. So waiting for all of that. Gauhar, thank you so much for this interview, and may you bask in the success of not just this one film, but in everything, every project that you take, and in life as well. So thank you so much. And so sweet of you. God bless you equally. And it's been lovely talking to you. Thank you so much for your kind words. Thank you. Thank you. Bye-bye.